I mean, the only thing that should throw anybody off is love and adulation. So that's great. Well, I hope you continue to get as much love and adulation as you are getting this evening. But let me ask you this. Now you remember. I remembered, okay? I'm not going to look there right now. But, you know, जब हम school में जाते हैं and people tell you in school that, if your family member is a doctor or any other field or an actor, you naturally have this rebellious side to you where you say, no, I'm not going to go into the same field. Yeah. So I naturally had the same side to me where when people would tell me, you're going to be an actress, of course you're going to be an actress. And I'd be like, no, I'm not. But deep down, I always wanted to be. And it just organically happened that I developed a passion for it as well. And you know, you've spent the last 12 years now doing what you love doing. But what I want to understand from you, Shraddha, is, and you know, as a young person, as a young woman specifically, getting into the movie business, even though you're familiar with it, you're comfortable with your environment, did you always feel the need that you needed to conform to what an actress is supposed to look like, how an actress is supposed to be? You know, was that always, did that constrain you, at least in the first few years, where it was hard for you to maybe express who you really were? Did you bring your authentic self to the set, or were you trying to play a part even in real life? That's a very interesting question, and I have to say that the way that you think starts in your household. And your perspective to life and the way that you look at life starts at a very young age. So I feel so proud to say that I come from a household where my brother and we were treated equally. For us, I was never told कि अरे, you know, आपकी मासी एक औरत है और देखो उन्होंने क्या कामयाबी पाई है लाइफ में, औरत बन के उन्होंने कामयाबी पाई है. So that was never a thought in my household. It was, okay, my father has achieved great things for himself. My Masi has achieved great things for herself. You should also strive to be like that. So having been brought up in that manner, I have to share that when my first films didn't do well, there were a lot of people who were telling me that, oh, you know, as an actress, if your first two films don't do well, then, you know, you will never get any films and you will... There were a lot of people around me who said that, but I did not have that in my household. And I feel like that was such a strong foundation for me. And a lot of my thinking came from the conversations that I've had at home. Be it, to answer your question, I would say that it wouldn't strike me that an actress has to be a certain way or has to behave a certain way. Because I'm very happy that my foundation made me think very normally, very differently, that it applies to both genders. Yeah, and how much of that has impacted the choices that you've made when we talk about the roles that you've done and the movies that you've decided to take on? And I'll ask you this in the context of Stree, and I don't know how many of you remember, but I believe that there's a Stree 2 coming as well. But for you to play a ghost, and a ghost that preys on men, I mean, not too many women would have, would have wanted to play that part. So how much of the choices that you make in terms of the parts that you accept in the movies that you take on is conscious and deliberate, and how much of it is just organic? You know, I don't think I've spoken about this when we were promoting Stree, but there was a very, I'm actually very grateful to my director, Amar Kaushik, and my producer, Dinesh Vijan. I'll tell you why. Because when Stree was offered to me, they offered it to me as a cameo. They offered it to me as a special appearance. And I just was so amazed and so entertained with the premise of the film being about having a larger social message in an entertaining manner, that I requested them that, you know, can I be a part of the cast, and actually, can this not be a special appearance? I don't want to feel that this is a special appearance. And they completely agreed to that. Well, it changed the whole movie then. And I feel like for me to be a part of that, to be the front runner, to be right there, proudly being on the poster of that film and being right in the front, I felt that I'm proud of this film because
for filmmakers to touch upon, as I said, social causes, social conversations in an entertaining manner, I don't know how many of them do it very successfully. You know, you said something interesting here. You said that you had a conversation with the director and the producer and said that it shouldn't be a cameo, that it should be a much larger role. And that resulted in a completely different movie. But how much say do you have as an actor, or for the lack of a better term in this context, as an actress, to dictate what the story should be or how the part should be played out, what layers the character should have? How much say and space do you find that you get? You know, Shireen, actually when you start meeting people for a film, or you start hearing a film, you start interacting with producers, you start interacting with the makers, very early on in the meetings, and I've started figuring this out, I can gauge how they are seeing a character. I can gauge, okay, they're seeing this character to be a significant character in the film. I can see that they're going to treat the character equally to the male character or other characters in the film. You can gauge that, or rather, I've started to be able to gauge that now. Have you ever walked away if you felt that it wasn't going to be a fair balance between what they were telling you and what the part would eventually look like? Absolutely. I absolutely have. And I feel like that it's my responsibility to do that, because I feel that the audience that I have built for myself now, they would not want to see me in parts where there isn't a strong layer to that part. So I feel like I'm responsible towards them as well. So there are a lot of no's that I've been saying. And I think that also happens after you, for me personally, after I've also become clear and I had a clear gauge of, okay, the kind of work that I want to do. So as I was saying that early on you can gauge how collaborative a team is going to be. And I actually want to share this, or rather share this with my colleagues or my contemporaries as well, is that you can gauge an energy in a meeting. You can gauge an energy with the producer. You can gauge an energy with the director. If you feel that your character is not going to get the same kind of respect or is not going to be treated in a way or portrayed in the right way, then be aware of that. And take your time to ask the questions. You know if your questions are going to be answered. You know that if you get an energy, okay, this will be collaborative. Then watch out for a collaborative effort. Watch out for the red flags and don't be afraid to ask the questions, and don't be afraid to walk away if it's not aligned with what you're looking for. Absolutely. Watch out for the red flags in a meeting. Gauge, don't be in a rush to say yes to a film. Ask your questions, know if it's collaborative or not, and then go ahead. So, you know, you talked about wanting to play parts that have layers. What is the part that you would like to play? What do you aspire to play? Is there a movie, is there a role, you know, domestic or global, that you aspire to do? You know, I feel that we're at a great time for women in cinema right now, with films like Gangubai, with Razi, with Neerja. There's Manikarnika. Some of them are blockbusters, some of them not. There would be Hasina, which is my film. There would be Thalaivi. There are so many films. So I feel that people are making these films. And people are on the lookout of strong female characters, strong stories that can be told. So frankly, I feel that because we are at a good space right now, I would be open to any interesting story, because I think that there are so many interesting stories of women out there. You know, you talked about the fact that we're seeing this change where women are now getting the leading role. So in a sense, they're playing the heroes of a film.
and not being relegated to sort of the, the song and dance aspect of it. How much of this change is because, you've got the OTT platforms now, so there is a different kind of content that the audience is getting used to? How much of it is the fact that, this is an aspirational country with a young population, and so choices for that audience, is different, and they're willing to experiment with the kinds of content that they consume? What do you believe has led to this change that we're seeing, where women are being portrayed so differently than what we're used to? There is this conversation about whether film is a representation of society or vice versa. And frankly, I feel it's a conversation. I don't think that we can land up at a conclusion about it. I can comment on what I've observed. I do feel that even before the entire OTT wave came on, we've had films like Neerja, we've had films released before where they have been about, women being the central character. So I also feel like, a lot of the times I hear that people say that, on OTT you can experiment, but I don't entirely agree with that. I feel like we have seen some massive theatrical releases. That's right. So I don't agree with that particularly. I feel that it's also about the market in some way, if I may say so. Yeah. I also feel that that has a role. It also has to do with times. There are different topics, there are different social topics which are of relevance. Back in the day, we didn't have touchscreen phones. We didn't have people watching content on their phones. Yes. The allure of going to a theater was very different. I don't remember when exactly touchscreen phones came, but I didn't have a touchscreen phone. I remember that. Well, so they've been around for a while now. So. And they've been around for a while, but I remember that I had the button phone as one of my first phones. Yeah. And so I feel that cinema also changes with the times. And with technology, and with the fact that we now have single screens and multiplexes coexisting, and that has changed the way that people consume their movies. Speaking of phones and speaking of technology, what has also changed is the fact that you now have social media. I don't know how many of you know this. She has 85 million followers on Instagram. Is that the last count? I don't remember exactly, but it's 80 plus. It's 80 plus, so 80 million followers on Instagram. Who is the real Shraddha Kapoor? Is what we see on Instagram the real Shraddha Kapoor? 100%. Absolutely, that's me. I love sharing when I'm having my poha. I love sharing when I'm enjoying my cup of chai in my little cup, which I'm so attached to, that every day I'm like, is my cup okay? Is my cup okay? The polish of my cup is coming off, but I still want to share. And people know that, I love sharing that. What else? What did I have for dinner? I love sharing. Is there such a thing as oversharing, or you don't believe that there's any concept of oversharing? I feel very, very fortunate for the kind of relationship that I've developed with my well-wishers and fans. I'll be very honest with you. I think it's extra special, if I may say so. We have like-minded thoughts. Even when I go out somewhere and someone tells me, I have the same handbag that I saw in your post. And we discuss, someone will say that, I have the same trousers that you have, or the same kurta that you have. And it's so nice. It's so nice to feel like one big happy family. Yeah. And but what about the mystery and the mystique and the aura? I mean, before Instagram and before social media, you knew very little about the personal lives or behind the scenes or what an actor or an actress were like. And that perhaps that mystique and that mystery perhaps elongated their careers as well. Do you believe that is the case, and perhaps this need to constantly put things out about yourself and share as much as you do takes away from that? I feel like we hear this conversation happen very often, but I really wonder, say in the 1950s,
if they had Instagram, would they not use it? I'm wondering, right? Would they not use Instagram if they had touchscreen phones and the OTT platforms? Would they be like, no, I'm not going to watch something on my phone? I wonder. So I feel, again, we go back to that conversation about changing times and technology, and basically, the only constant is change, right? Yeah. It's pretty much that. I do feel that from my personal experience, my relationship with my fans has been enhanced to a whole other level being on social media. Because of the immediacy of the contact as well as the access that Absolutely. you've been able to give them. So you do control the Absolutely. narrative and you control your own story as And well. I have to tell you that the kind of joy that I feel when I'm reading their DMs or when I get to go on. Do you read them or do you have a social media manager? I read them, and I have to say that I have to tell myself, okay, how much has my screen time been today? I have to look at that as well. But it's all me, and I have to tell you that the joy that I get when I read DMs and when I read comments and I get to interact on comments, and you really know what someone is thinking. You know, I don't know how much of that existed because Yeah. I would imagine that stardom was also a lot more sheltered, perhaps. Yeah. To a certain degree, Yeah. is my imagination of it. So I have no qualms in the era that I'm in, and I'm embracing it wholly and solely. Yeah, clearly, with 85 million followers, it clearly shows that you're embracing it. But you know, that's the good and the bad side of this. So the good is that you're getting all of this adulation and love immediately from your fans, and they're responding to you pretty much in real time. But you can also have a situation where you have people not say very nice things to you because anonymity provides that safety to say whatever you want to say without any consequences. How do you deal with that? I apply the same kind of thinking that I've been brought up with, which is perspective, which is what you pay attention to grows. If you believe, if I focus on the love and adulation, and if I focus on also trying to hope that when I share candid aspects of my life, maybe someone is going to get inspired in some way also. So I focus on that very, very frankly. And I feel that that is something that I use also as my strength. Well, you know, speaking of strengths and things that you're looking forward to, and people that you worked with, who do you look up to as the iconic sort of star that inspires you? And from your peer group, you know, is there a peer that you feel more connected with or connected to in terms of the kind of work that they do? So icon and peer. I have so many people I look up to. So many icons that I look up to. I have them in my own household. I admire them for the way that they've brought me up to begin with. And of course, the kind of work that they've done has been phenomenal. In my peer group, there's so many people doing such good work. I recently watched Rocky or Rani Ki Prem Kahani, and I absolutely loved Alia in it. I thought that she was extremely effortless, so natural, an absolute delight to watch, and I thoroughly enjoyed watching her. Well, okay, so that's one big point there for Alia Bhatt in her latest movie. But, you know, I can't let you go. And again, she's a woman with many talents. One is, of course, that she's a beautiful singer. And I've been told by everybody in my producing team that we have to get you to end with a song. Wherever you like. It could be your favorite song. It could be a song that embodies your journey in the movie business so far, or what you hope to do in the movie business in the future. Are we already at the end of our chat, though? We are, unfortunately, good things don't last too long, unfortunately. So we are at the end of our chat, unfortunately. Okay. So this is when I'm supposed to sing? This is where you're supposed to sing. Do you want me to say action? Should I? Okay, I'm seeing we're playing dumb charades. You guys only tell me, what should I sing? On Will popular you sing demand. with me? Pakka. Promise. Pakka wala promise.
You look at them, they're dying, they're waiting for you to start. Okay. तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में होता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है. Okay, I went थोड़ा आगे, so we'll sing the chorus together. तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां. यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां. Thank you so much. Shraddha Kapoor, thank you for being such a wonderful sport, and thank you so much for sharing your life story, your life's journey, but more importantly, your dreams and aspirations with us here on this platform. Ladies and gentlemen, a big round of applause Thank you. for Thank you, Shraddha everyone. Kapoor. Thank you so much, Shraddha. And Shireen, I'd also request you, Shraddha, please stay on stage. There's a memento that is waiting for you. Next session is called Social Media Shakti. They command the digi space, and as micro celebrities, they are probably as popular as the movie stars. Finding opportunity in the way they express themselves, they have successfully carved out lucrative careers as influencers. As social media sensations, these icons dominate India's thriving creator economy and ensure media isn't considered a frivolous tool. Beyond the reels, the song and dance, the jokes, these influencers are body positivity champions, LGBTQI representatives, career consultants, doctors, financial advisors, you name it, and you'll find a role model in each one of them. जी हाँ, अभिव्यक्ति और अवसर का मंच यानी सोशल मीडिया, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया सनसनी बनना और उसे बरकरार रखना कम मुश्किलों भरा नहीं, परिवार से लेकर समाज के सवालों का सामना करना, अनजान दुनिया को अपनाते हुए खुद को समेट कर रखना, हर दिन एक नए ज्ञान के साथ प्रभावशाली बनना पहाड़ सी चुनौतियां लेकर आता है, जिसका मजबूती से सामना करते हुए इन शीर्ष शक्तियों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को सफल करियर में बदला। इस सेशन की कमान के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मेरी सहयोगी पलकी शर्मा को। जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनल का भी स्वागत करिए। कविता's किचन की कविता सिंह का हम चाहेंगे आप मंच पर आएं। इसके अलावा हंसना हो सकता है आसान हो, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रुति अर्जुन आनंद को भी, यूट्यूब कॉमेडियन जो कि हंसाती हैं। इसके अलावा स्वागत करिएगा अपर्णा टंडले जी का भी, जिन्हें आप काम वाली बाई के तौर पर बखूबी जानते हैं, और साथ ही फिटनेस एक्सपर्ट
रश्मि राय का भी जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शीर्षक। Let's first have a big round of applause for our panelists. Thank you. And I will ask you questions individually, but I want to ask one question to all of you. In a country and a world where everyone thinks of themselves as content creators, what do you see as your competition and how do you deal with it? Kavita Singh, let's start with you. You started Kavita's Kitchen. Of all things, you're teaching a country with so many varieties of cuisine to cook, and you're doing it fabulously. What made you take this up, and how has the journey been? First of all, thank you so much for having me here. और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि आपसे मिलूँ तो मैं आपको बताऊँ. मैंने आपको बहुत देखा है. और जैसे मेरी जर्नी 2014 में शुरू हुई थी, और जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा था और खाली टाइम रहता था घर पे, तो मैंने सोचा कि उस खाली टाइम को यूज़ करके कुछ किया जाए, क्योंकि बच्चे को छोड़ के ऑफिस नहीं जाना था. तब मैंने ये यूट्यूब का जो कुकिंग का आइडिया था, क्योंकि कुकिंग का पैशन मुझे पहले से ही था, और देन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल इन 2014. और जब मैंने रेसिपी पोस्ट करनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि आप जो बेसिक चीज़ें बताते हो कि गैस कब बंद करना है, कितना टाइम पकाना है, तो हम बैचलर्स बिगिनर्स को बहुत हेल्प होता है. तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा लोगों को ये चाहिए. तो मैंने उसको, जो लोगों ने डिमांड किया, उस चीज़ को अपना स्ट्रेंथ बनाया और उस पर काम करके मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया. और घर में कैसा रिस्पांस था कि हाँ खाना बना रही हो, अब वीडियो के साथ बना रही हो? हाँ, तो उनको मिल जाता था ना, मतलब वीडियो बनाती थी तो खाना भी ज़्यादा स्टाइलिश बनता था. तो वो बहुत खुश होते थे कि आज तो नया कुछ मिलेगा, आज तो नया कुछ मिलेगा. अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा पूछना चाहती हूँ, जो लोग खाने की रेसिपीज डालते हैं, क्या हमेशा परफेक्ट बनता है या कभी जलता भी है? ऐसा नहीं है, बहुत बार ख़राब भी होता है. तो मैं तो बहुत बार कोशिश करती हूँ, मतलब अगर मैं दूसरी कुजीन ट्राई कर रही हूँ जो मेरे एरिया का नहीं है या जो मेरे कल्चर का नहीं है, तो मैं उसको पहले 3-4 बार घर पे बनाती हूँ, लोगों से राय लेती हूँ कि सही बना है कि नहीं, देन उसकी रेसिपी पोस्ट करती हूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर एक बार मैंने वीडियो पोस्ट किया तो वो ख़राब ना हो किसी का, क्योंकि अगर आपने मेरी रेसिपी देख के बनाई और आपका खाना अच्छा नहीं बना तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप मेरे को अनफॉलो कर दोगे. तो वो चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है. Awesome. Shruti Arjun Anand, you're making people laugh and you have 10 million subscribers. How do you do it? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरी सिर्फ 10 मिलियन नहीं है. मेरी खुद की सोशल मीडिया कंपनी है जिसके अंडर 6 यूट्यूब चैनल्स आते हैं, एंड वी हैव मोर देन 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन टोटल, 6 यूट्यूब चैनल्स. तो डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ होती है, बट मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे आप किसी भी चीज़ को नो कर सकते हो. अपना 100 नहीं 200% दो, और फिर देखो अगर आपको नहीं रिस्पांस मिल रहा है इसका मतलब आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो. लेकिन अगर रिस्पांस मिल रहा है तो आपको सब खुद ही पता चल जाएगा कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं हो. पर हम अभी भी एक बहुत नए आयाम खुले हैं, पर फिर भी एक ऐसे समाज में हैं जहाँ करियर ऑप्शंस सभी के लिए लिमिटेड हैं. जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, आजकल बहुत स्टार्टअप में भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए और भी लिमिटेड है. सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस, और यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज अ कॉमेडियन, व्हाट वाज द रिस्पांस? तो मैं खुद एक इंजीनियर हूँ. अच्छा. तो जब मैंने फुल टाइम यूट्यूबर बनी मैं, तो स्टार्टिंग में लोगों को उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पता ही नहीं था कि होता क्या है. 2013 की बात कर रही हूँ मैं. तो लोग मजाक भी उड़ाते थे. कई लोग बोलते थे कि इंजीनियर होने के बावजूद आप ये क्यों कर रहे हो, कुछ और करो, आपके हस्बैंड IITian है तो आपको कुछ अच्छा ही करना चाहिए और लुक अप टू करना चाहिए उनको. बट हमेशा मुझे मेरी फैमिली ने, हस्बैंड ने प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम्हारा पैशन है, इसको फॉलो करो. जब मैं अपनी जॉब करता हूँ तो हस्बैंड ने बोला कि तो मैं पैशनेटली करता हूँ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप भी कोई भी चीज़ कर रही हो तो उसको पैशनेटली करो. स्टार्टिंग में तो रिस्पांस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, स्पेसिफिकली जब एक मुझे बोलना चाहिए मैरिड लड़की अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालती है, स्पेसिफिकली कॉमेडी और एक डिफरेंट जॉनर के, तो रिलेटिव्स बोलते ही हैं, काफ़ी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं.
बट मुझे लगता है कि परिवार वाले जो हैं वो आपके पिलर होते हैं. अगर वो हस्बैंड सब साथ दे रहे होते हैं तो आपकी जो पावर है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और आप और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो और लोगों को भी मज़ा आता है आपको देख के. बिल्कुल सही कहा आपने. अपर्णा टंडेल, और शुड आई से शीला दीदी, you know, I read somewhere recently that you may find a soulmate, but finding a soulmate is going to be that much more difficult. That's a huge gap in society to find the perfect person to work. Why did you think of all things of Kamwali Bai as a... Sorry? Why did you pick the idea of, you know, playing a Kamwali Bai? Okay. So, एक टाइम पे बहुत प्रेशर था कि कुछ चल नहीं रहा. बहुत ट्राई किया, बहुत वीडियोस ट्राई किए, बहुत कुछ किया, पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे. मतलब चल नहीं रहा था कुछ. तब एक ऐसा पॉइंट आया था कि कुछ ऐसा करना है कि जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो. ठीक है, तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है ना, तब उस बारे में ना हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा कर सके. इसलिए तो इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरी मम्मी काम वाली बाई है, वो थी, अभी तक कर रही थी, लेकिन अभी मैंने उसे रोक दिया. तो मुझे इस फील्ड का बहुत ज़्यादा नॉलेज था. मैं जब छोटी थी तब से मेरी मम्मी काम वाली बाई मतलब है, काम करती थी दूसरों के घरों में, तो उस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता था. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि मैं ये कर लूँ. तो अभी मुझे मम्मी को मेरे मतलब काम वाली बाई की मम्मी कहलाते. तो तो मैंने सोचा कि काम वाली बाई के इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या फिर मुझे ज़्यादा करने मिल सकता है, ज़्यादा फ़नी कर सकती हूँ. तो मैंने चूज़ किया कि व्हाई नॉट. पर आपको लगा कि यस, वंडरफुल, आपको लगा कंटेंट क्रिएशन ही करना है आपको? जी. आपने क्यों सोचा कि आपको वीडियोस ही बनाने हैं? मैं जब छोटी थी तब से मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मैं एक्टिंग करूँ. जब वो छोटी थी तब उसकी इच्छा थी, तो तब से वो मुझे ना मतलब नॉर्मली पेरेंट्स स्टडी में बहुत पुश करते हैं. मेरे घर वालों ने मुझे एक्टिंग में बहुत पुश किया है कि जाओ बेटा, करो करो करो, ऑडिशन को जाओ. मेरी बहनें हैं, हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो मेरी बहनें मुझे ऑडिशंस को लेके जाती थी. तो जब मैं 14-15 साल की थी तब से थिएटर कर रही हूँ, शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ. उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है कि फाइनेंशियली स्टेबल होना था, तो इस करियर में मतलब यूट्यूब लाइन, ये सब यूट्यूब कंटेंट क्रिएट करना ज़रूरी समझा. तो उस टाइम भी बहुत कुछ नहीं चला. फिर जब काम वाली बाई का जब हमने डिसाइड किया, तो पहला वीडियो हमारा बहुत वायरल गया. तो जो नहीं सोचा था, पहला ही पार्ट बहुत वायरल चला गया, और उसके बाद बहुत सारे पार्ट्स बनाए. अभी लिटरली हमारे 82-85 पार्ट्स हैं, और हर एक वीडियो को 10+ मिलियन व्यूज़, 100+ मिलियन व्यूज़ है. और हमारा अभी शॉर्ट्स ब्रेक यूट्यूब चैनल नंबर 1 इंडिया का यूट्यूब चैनल है. और उसमें एक्चुअली मैं अकेली दिखती हूँ बहुत बार. यहाँ पे मैं बहुत चाहती थी कि मेरी पूरी टीम आए, क्योंकि दिखती मैं अकेली हूँ, पर उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के एफर्ट्स होते हैं. जैसे कि मेरे सर है, मेरे साथ जो को एक्टर्स रहते हैं, साइली, प्रशांत, वो भी ज़्यादा बहुत फेमस है. तो मैं चाहती थी कि वो भी आए, पर वो नहीं आ सके. आपसे बात करके बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं 23 साल की एक लड़की से बात कर रही हूँ जिसके 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और इतनी बड़ी इस बारे में बात मुझे कह कहना है दी कि मेरी पूरी टीम को मेरे साथ होना चाहिए था. प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर. इस बारे में मुझे एक कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे किसी ने कहा कि आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा कि आई एम 23. तो उन्होंने कहा कि बहुत कम एज में आपने बहुत कुछ कमा लिया. तो आई वॉज लाइक कि बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है मैंने, इतनी कम उम्र में बहुत दिन भी देखे हैं मैंने, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ किया है यहाँ पे पहुँचने के लिए, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं. मतलब मैं क्या ही बताऊँ. तो इतनी इजीली नहीं पहुँचूँ मैं यहाँ पे. बहुत मेहनत की है, और मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं शक्ति हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. And I think that's a story that everyone shares. सभी का जो जर्नी होती है, किसी का ज़्यादा स्ट्रगल, किसी का कम, पर जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तब तक आप उस तरह की सक्सेस नहीं देखते हैं. Let's come to Rashmi Rai, who's a fitness expert. We see a lot of fitness experts on social media. A lot of them are also trash for giving advice that is not proper. But you stand out. How do you do it, and how responsible do you think your role is? जब आपको इतने सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आपको देखते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो do you feel that sense of responsibility? I know this is out of context, but I'm just so thankful to be sitting on this stage
जहाँ पे प्रेसिडेंट जी आई थी. I know it is not related to the question, but just coming back to the question that लोग बहुत सारे रील्स बनाते हैं, कॉमेडी, फनी, कुकिंग एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग. शायद मैं सबसे ज़्यादा स्क्रॉल करके इन सबकी वीडियोस देखती हूँ एंड आई नो देम ऑल. बट फिटनेस इज़ अ जॉनर जो आप सब लोग जितने बैठे हैं, आप लोग भी उसको एक बार स्वाइप मारते होंगे. बिकॉज टाइम पास करने के लिए कोई फिटनेस नहीं देखना चाहेगा, बल्कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फिटनेस ही है. जैसे कि एक मैम ने अभी कुछ दिखाया था करके कि अगर आप पे अटैक होता है तो आपको क्या करना है. बट डू यू नो, अगर वही चीज़ आप थोड़ी सी शक्ति या पावर के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. और वो कैसे आप बनेगा? जब आप खुद पे मेहनत करेंगे और हेल्दी होंगे. आई नो मैं कुछ भी बोलूँगी वो हमेशा ज्ञान ही कंसिडर होगा, सो आई डोंट वांट टू टेक इट देयर, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर स्पेशली क्योंकि ये शक्ति की बात है, तो वो एरा चला गया जब हम पतली होने की कोशिश करते थे. नाउ द एरा is of muscles. Let's be strong and fight it out. So it's important कि आप लोग जिम करें, हेल्दी रहें, किसी भी तरीके का कोई एक्टिविटी करें. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप आज शक्ति में बैठे हैं, तो आई एम नॉट गोना लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी विदाउट डूइंग सम पुशअप्स. बिकॉज लोग बोलते हैं लड़कियां पुशअप्स नहीं कर सकती, लड़कियां पुलअप्स नहीं कर सकती, लड़कियां वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती. एंड आई डू डेडलिफ्ट्स ऑफ 100 kgs. इज देयर ऑन माई इंस्टाग्राम, नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, बट लेट्स जस्ट डू सम quite of push-ups for all the girls and women out there, and I love you all. So let's just do have it. it, yes. And I thought I'm gonna remove my heels, but just let's show everyone here that we can do it with heels. So let's do it. Wow. We go down, and then let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh my God. Take the mic. Sorry. Just wanna say I'm not another 23, 25 or 20-year-old. I'm 36 years old with a baby. Yeah, and I have a baby girl. She's 10-year-old. Probably she's watching here. So this is for you and my mom and my father-in-law. I just want to say कि लोग किन्होंने कहा था कि लड़कियों का ब्रेक लगता है जब उनका शादी होता है. तो मेरे I'm just out of breath because of push-ups. तो मेरे शादी से पहले my mother who is here, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, and I'm because of her. And शादी के बाद my in-laws, and he is here. So I want to thank them all. Wow. I have no words. Awesome. So you're all so popular, you're all celebrities in your own right, and जब फिल्म स्टार्स कुछ कहते हैं या कुछ एंडोर्स करते हैं तो काफ़ी स्क्रूटनी होती है. क्या आपको भी वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि हर उम्र का बच्चा हमें देख रहा होगा, हर कोई देख रहा होगा, हर एक की बॉडी, फॉर इंस्टेंस एवरीबडीज बॉडी इज़ नॉट द सेम, यू नो, सम एक्सरसाइजेज आर फॉर सम पीपल. So do you feel that sense of responsibility increasingly because you are reaching out to so many people? Yeah, so when it comes to endorsements, I can proudly say that out of 100 endorsements, 97 to 98% I have either used myself or my family members, and 2% is sometimes we all are here to make money, so sometimes you have to just do it. But otherwise, I take accountability of everything, and other 2% that I promote is not harmful for the audience. It's just something that they might use and might not use. But accountability 100%. Like for example, you would see a lot of videos wherein this talk about spot reduction. Especially women, हमको हमेशा problem होती है कि हमारे waist से कम नहीं हो रहा या belly fat कम नहीं हो रहा. But do you know, ये gents और guys they say दम है ना तो इतने स्ट्रेंथ करके दिखा. हाँ, हम मानते हैं कि आप हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, 100% हो. अगर आप में दम है तो आप एक बच्चा पैदा करके दिखा दो ना. You have that biological advancement for you कि भगवान ने आपको पावरफुल बनाया है. And from the ages and ages and ages, जितना भी मैंने सुना है, strength is power. And लड़कियाँ, please, small waist is out of fashion. इतने अच्छे muscles, toning
strength, power. So आप सब कुछ achieve कर सकते हो. Coming back to endorsements, I take accountability of whatever I have promoted, and मुझे कभी backlash नहीं मिला because our team, we check everything and then we promote. Yeah, it's a very inspiring speech. I wish it had come in the beginning of the week, but we are heading into the weekend, so I'm not sure how much of it I will retain and go back to doing a workout. I don't know about the others. But let me ask this question to Shruti as well. You know, humor is also, there are no boundaries really, and all sorts of people consume that content. तो क्या आपको कभी लगता है कि मेरा audience कौन है, मुझे कौन देख रहा है, किस तरह की भाषा का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए? ये सब ख्याल आते हैं आपके दिमाग में जब आप बनाते हैं? बिल्कुल आते हैं. मेरी खुद की बेटी 8 साल की है और कुछ भी बनाते से पहले मैं ये सोचती हूँ कि मेरे कज़न्स के बच्चे, मेरा बच्चा कल के दिन अगर उसी कंटेंट को देख रहा है तो वो उसको कैसे सोक करेगा. तो जो मेरा बच्चे देखने लायक नहीं है वो कंटेंट दूसरे के बच्चों के देखने लायक कैसे हो सकता है, चाहे वो बड़े हों या फिर टीनेजर हों. तो इतना ध्यान तो मुझे लगता है एज अ मदर मैं स्पेसिफिकली रखती हूँ अपने कंटेंट को लेके. अपर्णा, at 23 आपने इतना सब कुछ कर लिया, तो अब आगे क्या? अब आपका आगे का करियर आप कैसे देखते हैं? अभी तो मैं खुद को इतना सक्सेसफुल नहीं समझती हूँ, तो आगे ऑफ कोर्स एक्टर हूँ तो मूवीज़ करने हैं, सीरीज़ करने हैं. अभी इंडिया जानता है, बाहर भी जाना है, फेमस होना है, बहुत सारा नाम कमाना है और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में जाना है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. कविता जी, आप वीडियोस बनाती हैं, उनसे आपको आई एम श्योर फ़ायदा होता है, पर बहुत सारे लोग जो अपना घर छोड़ के दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, यंग लोग, वो पहले के समय अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछते थे कैसे खाना बनेगा. कोविड के समय वीडियो कॉल करके पूछते हैं. अभी वो मेरे वीडियो का लिंक आपका वीडियो देखते हैं? नहीं, अभी वो उनकी मम्मी मेरे वीडियो का लिंक भेजती है मोस्टली. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, जैसे जो बाहर रहते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि मेरी सिस्टर ने, मेरी मम्मी ने आपकी वीडियो का लिंक भेजा है. और वो जो रेसिपीज़ होती है, जो फूड होता है, वो हमारी मम्मी के फूड से बहुत कनेक्टेड होता है. तो प्राउड फील होता है कि चलिए ठीक है, मैं जो कर रही हूँ वो मदर वाली फीलिंग जो होती है ना, वो बच्चों में आ रही है या लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक वार्मथ क्रिएट करता है ऑडियंस और मेरे बीच. आपके बच्चे प्राउड फील करते हैं, बताते हैं सब लोगों को कि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है? बच्चों के स्कूल में टीचर बोलती है कि अरे आपकी मम्मी तो इतनी बड़ी शेफ़ है. उनका टिफ़िन खोलने के लिए ऐसे भीड़ लगती है. अच्छा. और मैं भिंडी पराठा जो मेरी मम्मी देती थी वही मैं देती हूँ. मैंने कहा कि मम्मी शेफ़ है, ऐसा थोड़ी ना कि रोज़ टिफ़िन में पिज़्ज़ा पास्ता जाएगा. तो पहले बच्चे, मतलब बेटा जब बड़ा होने लगा तो उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, हर जगह जहाँ पे जाओ लोग फ़ोटो खिंचवाते थे, तो थोड़ा सा उसको एम्बैरेस फील होता था. बट फिर मैंने उसको समझाया कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, आप देखो. हाँ, मैं सिखा रही हूँ, मैं एजुकेशन वीडियो बनाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो मैं अगर किसी को सिखा रही हूँ तो यू शुड फील प्राउड. अभी वो बहुत खुश रहता है स्कूल में, उसके पेरेंट, मतलब उसके टीचर, प्रिंसिपल सब मुझे जानते हैं. तो अभी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है. और मेरे को लगता है अच्छा काम आप करोगे तो बच्चे प्राउड ही फील करेंगे. कुकिंग एक लाइफ स्किल है, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए. कोविड में जैसे हर किसी ने कुक किया, चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या कोई भी, सबने कुकिंग किया. तो मेरे को लग रहा है कि बच्चों को क्या, हर किसी को खाना बनाना तो आप सीखना ही चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो सिचुएशन फिर से कभी कैसा आ जाए. बिल्कुल बिल्कुल. श्रुति, डू यू थिंक दैट बहुत सारी महिलाओं के लिए, जिनके लिए ऑफिस जाना संभव नहीं था, जिनके लिए एक जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस नहीं थे, सोशल मीडिया ने एक नया, कंप्लीटली नया एक आयाम उनके लिए खोल दिया है कि आप घर में अपना फ़ोन सामने रख के जो आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं. डू यू फील एम्पावर्ड व्हेन यू सी योर वॉइस रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल? येस ऑफ कोर्स. और ना केवल मैं काफ़ी सारी ऐसी औरतों से भी मिली हूँ कि जिनको अब कैमरे के सामने नहीं आना था, तो वो जैसे कहने की बात है DIYs बनाते हैं या रंगोली के वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे उनकी शक्ल भी नहीं आ रही है, लेकिन वो काम कर पा रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं, घर बैठ के पैसे भी कमा पा रहे हैं. और मतलब एक ज़रिया सा उनको मिल गया है कि आप जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग, जब आप बच्चों की वजह से जॉब छोड़ते हो तो कई बार लोग आपको कमज़ोर समझते हैं और समझते हैं कि इनके पास इतना दम नहीं है, ये तो नहीं कर पाएंगे, या जॉब देखना और साथ में घर देखना
नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियां करना नहीं चाहती, बट मुझे लगता है कि एक होम मेकर के पास जो शक्ति होती है शायद उसको लोग उतना अच्छे से समझते नहीं हैं। और जो शक्ति होम मेकर्स ने स्पेसिफिकली, और काफ़ी सारी मैं किसान लेडीज़ से मिली हूँ जो कृषि के बारे में और गार्डनिंग के बारे में भी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। बेसिकली मुझे कहना है कि कॉमेडी या फिर मेकअप, ब्यूटी, इन सब के बारे में तो हमने सबने ही सुना हुआ है, बट ऐसे बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूशन्स, प्रोनाउंसिएशंस कैसे करें, उन सब चीज़ों के बारे में भी लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया के थ्रू कि वो अपनी वॉइस जो है बहुत अच्छे से रख सके। और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, पर समय ख़त्म हो गया है। पर मुझे लगता है कि जब आप लोगों से मुलाकात होती है तो ऐसा नहीं लगता कि पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी बार देखा है। तो आपसे मिलते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मोर पावर टू ऑल ऑफ यू, यू आर डूइंग fabulously. Thank you very much.